which molecule is responsible for that inheritance and variations. Okay, that is why we call it as the molecular basis of inheritance. You getting my point, everybody? Yes or no? Okay. So, the first question would be that is there anything called as genetic material? This is the first question. We'll start with the search of the genetic material. Okay. So at the time of Sir Gregor Mendel, he said that every organism shows the presence of factors, and those factors are responsible for your character. So if I am tall, tallness is my character because of a particular factor present in my body. Are you getting my point? So if the pea plant is tall, the tallness of the pea plant is because of a factor. If the pea plant is dwarf, it is because of a factor. So this was the Mendelian idea of a what would you know? Factor. Okay? So if you have blue eyes, your blue eye color is because of a. Now, if you could ask those genetics and geneticists of those time, okay, what is the factor? Where is it present? What is its chemical nature? तो उसका आंसर उनके पास नहीं था. So nobody knew at that time the chemical nature of the so-called Mendelian factor. Did you get my point, मुझे लोग? आपको समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मेंडल ये सही थे कि गलत थे? सही थे, 100% सही थे ये बोलने में कि आपके जितने भी ट्रेट्स हैं, आपके भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो किसकी वजह से? फैक्टर्स की वजह से. गाड़ी कहाँ अटक गई कि जब आपसे ये पूछा जाता था कि ये फैक्टर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कहाँ पे लोकेटेड है, इनका केमिकल नेचर क्या है, तो वो टाइम पे उसका आंसर नहीं था. We had to search, we had to prove that there is some chemical within the cell, rather inside the nucleus, which is responsible for inheritance and variations, or heredity and variations. And most of the geneticists of those times were convinced that it is the proteins which is responsible for heredity and variations. तो वो टाइप के जो साइंटिस्ट थे उनका ज्यादा करके उनका सोच ये था कि ये जो फैक्टर है जो हेरिडिटी और वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइम कैंडिडेट नंबर 1 कैंडिडेट कौन है? कुछ लोग प्रोटीन्स है कि ऑलरेडी प्रोटीन्स को काफी स्टडी किया गया था, उनके ऊपर रिसर्च की जा चुकी थी. प्रोटीन्स के अलग अलग टाइप्स थे, प्रोटीन्स कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मालूम था. तो वो लोग एक बायस बन चुका था. बायस मतलब एक माइंडसेट बन चुका था कि जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? प्रोटीन्स होगा. So scientific community at that point of time had the belief that the protein is the genetic material which is responsible for heredity and variations. And when something new comes, it is very difficult for the scientists also to accept, to go against their already set notions. मतलब वो लोग को भी डिफिकल्ट जाता है ये बात एक्सेप्ट करने के लिए कि हम लोग गलत हैं और प्रोटीन से जेनेटिक मटेरियल नहीं है. तो काफी टाइम तो ये प्रूव करने में गया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. और इसको एनसीईआरटी बोलता है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जहां पर अपने पास 3 कैंडिडेट्स हैं बच्चों. एक है डीएनए, दूसरा कौन है? प्रोटीन्स, और तीसरा कौन हो सकता है बच्चों? आरएनए. Are you there with me, everybody? Yes or no? Okay. So, some of the experiments that have been mentioned are, one of them is Griffith's transforming principle experiment.
Okay. Sir Frederick Griffith, he performed an experiment with the help of which he proved that there is something called as the transforming principle. कि कुछ तो एक चीज है जिसको उसने क्या नाम दिया है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ओके. Griffith was working with Diplococcus pneumoniae. What is the name of the bacterial strain, bachcho? Diplococcus pneumoniae. From the second name you can know which disease it can cause. Tell me which disease it can cause. Pneumonia. Loudly. Pneumonia. It's a coccus. Matlab, is it rod shape or spherical? Spherical. Will it be a single ball or two ones, bachcho? Yes. That is what is called what? Diplococcus pneumoniae. Okay. And the Diplococcus pneumoniae shows the presence of two strains. What does it show the presence of? Two strains of Diplococcus pneumoniae. Okay. One strain is the rough strain, and the other strain is called as the smooth strain. The smooth strain is called so because it is covered by a capsule. Okay, and the rough strain is non-capsulated. उसके ऊपर capsule नहीं है. So जब दोनों किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं तो ये स्मूथ स्ट्रेन के पास अपने बचाव के लिए क्या है, कैप्सूल है. तो वो इम्यून सिस्टम के अटैक से काफी बार मर जाएगा कि बच जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट हैज द एबिलिटी टू बी वायरुलेंट. वायरुलेंट मतलब इट हैज अ डिजीज कॉजिंग एबिलिटी. मतलब it is the one which can cause pneumonia, whereas the rough strain is a non-virulent strain. Did you understand my point? So which is the virulent strain, which is the smooth strain, and the non-virulent strain is the rough strain. Okay. Now, see, what he did was he took a live R strain. Live म्हणजे जिवंत. And he injected into a mice. As some of you were not available at that time, okay, he injected into a mice. And what happened is, the mice did not suffer from pneumonia. It remained alive, and from the blood he was not able to isolate any strain, क्योंकि माइस के इम्यून सिस्टम ने आर स्ट्रेन को क्या कर दिया, मार. Okay, so I'll say that not able to isolate which strain, bachlo, R strain. Did you get my point, everyone? In the second set of experiment, he took a live, what kids, S strain. Say, क्या किया उसने? Injected into a mice, and the mice died, and he was able to isolate a live S strain from the dead body of the mice. समझ में मेरी बात आया ना? तो उसने conclude किया कि the death of the mice was because of the infection caused by the live S strain. Any problem, bachlo? No. In the next set of experiment, he heat killed a R strain. What did he do? He I'm sorry. He killed
Which strain को चलो? S strain. S strain. That is the smooth strain, virulent one. And injected into a mice. The mice remained alive, and he did not isolate. No isolation of which strain को चलो? S strain. आया ना? Heat killed था वो. मतलब उसकी कैप्सूल वैप्सूल सब ब्रोकन थी, मरा हुआ था. इम्यून सिस्टम ने उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया. Got my point? In the next set of experiment, he took a live R strain plus a heat killed S strain. Guys, did you follow what I said? क्या लिया उसने? R strain and a heat killed S strain. And what did he do? He injected inside a mice. He was expecting कि R strain तो मैंने लाइव रखा है, लेकिन जो वायरुलेंट S strain है उसको क्या कर दिया मैंने? हीट से मार दिया. तो नॉर्मली वो क्या एक्सपेक्ट करता रहेगा कि the mice will live or will die? Live. बेसिक है उसको कुछ अब सोचो मत. So he was expecting that the mice will live. But what happened was the mice was dead. And from his blood, he could isolate living S strain. ये तो एकता कपूर के सीरियल जैसा होगा कुछ, है ना? ये मरा हुआ अब ऐसे ऐसे कैसा पॉसिबल है भाई? Now I want my hundreds of Griffiths sitting inside this classroom to think about how this is possible. Let us start with the biggest Griffith. Where are they? Thus? Why thus? Who said thus? Huh? You only tell me, chalo. Yeah, please stand up. What is your conclusion? Please, huh? Don't feel shy. Huh? मैं ऐसे किसी को कुछ बोलता हूँ सरकास्टिक में भी कभी नहीं तो कुछ बोलता हूँ मैं नहीं खड़ा है सजा दे बता तेरा अनुमान क्या है बाबू? बाद में दक्ष बताए कि मुझे लगता है दक्ष ही बता पाएगा कि ऐसा क्यों हुआ. हाँ दक्ष बोल लो कर बोल बात नहीं क्या कैसे बच्चे लोग कि उसने जिस टेस्ट ट्यूब में हीट किल्ड कौन सा स्ट्रेन डाला? एस. तो उसके कुछ कंपोनेंट्स ब्रेक होके गए होंगे और उसने क्या लिया बच्चों लोग? लाइव कौन सा स्ट्रेन लिया? आर. तो इसमें कुछ तो पार्ट्स थे जो क्या हो गए? गए. किसके अंदर? जिसकी वजह से आर स्ट्रेन किसमें चेंज हो गया? एस स्ट्रेन. मतलब आर स्ट्रेन अंडरवेंट डैश transformation into which strain? S strain. Okay. So 1 year down the line, God willing, you'll come to meet me after becoming doctors, and you'll see a six-pack abs, and you'll be like, "Oh, sir, you have undergone an amazing." You're going to see. It's a challenge. Okay. तो आप क्या बोलोगे? अरे transformation. So what is the meaning of the word transformation? Change. In genetics, when one bacteria takes genetic material from outside and undergoes changes, it's called as what? Transformation. ये possible explanation ना? जिंदा हुआ मरा हुआ एस स्ट्रेन फिर से जिंदा तो नहीं हो सकता. पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है कि तुमने हीट से किसको मारा? एस स्ट्रेन को. तो उसके जो पदार्थ थे वो आर स्ट्रेन ने ले लिया और उसके अंदर चेंज आ गया और वो किस में चेंज हो गया?
तो ग्रिफिथ को पूछा, ये भाई ये पदार्थ, ये सब्सटेंस कौन है? तो उसने बोला लाहाजा, अंत, मुझे मालूम, मैं उसका नाम देता हूं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। What am I going? So what is the name he gave? Transforming principle. So who is the transforming principle? DNA, RNA, प्रोटीन, मालूम, लेकिन कुछ तो है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कहाँ गया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। Did you all agree with my point, Bachelo? Let's go again. Many years passed, and another experiment was performed by Avery McLeod McCarthy. क्या नाम है उनका अंकल लोग का? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म by who? Avery McLeod and McCarthy. Okay, कौन सी कार्टी? McCarthy. ए दुबे क्या कर रहा है भाई, पीछे क्या है बता हमको। ठीक है ना, amazing guys. Who? Avery McLeod McCarthy. They continued with the Griffiths experiment. They continued with the what was the Griffiths का last part? Take up live state, heat gain, gas gain. But wait, उसको अपना भी कुछ करना पड़ेगा उन लोग को। Now, in that test tube, they added proteases. क्या ऐड किया? Proteases. Another test tube, they added RNases. And the third test tube, they added DNases. What does this mean, Sarah? RNases, DNases, and proteases. And they use this concoction. Concoction मतलब this mixture, and they injected into whom, bachelo? Mice. Why did they inject into mice? Because you guys were not aware. Okay? So किसमें इंजेक्ट किया उसने? माइस में। इसको पूछा था मैं। हाँ, सारा। So what are these proteases, RNases, and DNases? I just forgot. Yeah, tell me. In the scheme of the interstellar and the matrix is looking out for us. Like that? Okay. Yes, Rajvardhan, what is proteases? Oh, everybody clap for Rajvardhan. Yes, Rajvardhan. एक टॉपर बच्चे ने आंसर दिया है कि क्या है प्रोटीजेस? एंजाइम्स है। वरना तो हम गरीबों को तो मालूम ही नहीं था कि प्रोटीजेस क्या है? एंजाइम। So proteases are enzymes that can digest proteins. मालूम ना क्या है? हाँ तो मेरी टेस्ट ले रहे थे। जैसे सर को याद आप लोग भी देखते हैं बता के। RNases would be RNA breaking down enzymes. DNases will be so when they took proteases injected into the mice, आप बताइए ना ये जो माइस है इट रिमेन अलाइव और डेड? बेचारी तो इसका मतलब अब कहाँ एब्सेंट ही थी मैं तो वो भी। हाँ बताइए दादा, हाँ ये माइस अलाइव होगा कि डेड हो जाएगा? क्यों? क्यों? आपका क्या अनुमान है? पार्थ, आपका क्या अनुमान है? डेड। क्यों? क्योंकि प्रोटीएजेस वो जो एस टेम के कंपाउंड आर टेम में रहते हैं उसको प्रोटीन नहीं होता।
ओके वो डाइजेशन हाँ, इसका मतलब अगर यहाँ पे माइस मर गया, इसका मतलब क्या प्रूव हो गया कि हु इज द जेनेटिक मटेरियल? प्रोटीन। बराबर कि नहीं? एंड द माइस remained alive and they could isolate which strain बचा? R. ऐसा अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सॉरी ओह वन सेकेंड हाँ Zero. हाँ ठीक है sometimes your mind leaves you in between that's the whole problem but 20 years also बीच में छोड़ के चला जाता है हाँ आपके तो ऐसा नीट का एग्जाम में हो गया तो फिर हो गई ठीक है so which strain were they able to isolate? Let me just again think. अभी प्रोटीन्स है कि नहीं है? प्रोटीन्स है कि नहीं है? नहीं। I think I have made some mistake. Just find out the mistake. प्रोटीन्स है कि नहीं है? नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। क्योंकि प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कोई और है। आज के डेट में हम लोगों को पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है डीएनए। So will the mice remain alive or will they be dead? Will they remain dead or will they be dead? They'll be dead. बराबर है? And what will they be able to isolate? Which state बच लो? So can I say in the absence of proteins, transformation has taken place. मतलब protein is not the transforming principle. Understood my point, everybody? Yes or no? कि प्रोटीन के एब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। सेकंड कौन है? आरएनएजेस। अब चेक किया, अब आरएनए है कि नहीं है? नहीं है। फिर भी माइस क्या हो गया? डेड। और उसके पास कौन सा स्ट्रेन निकला? तो बोलो बच्चों, आरएनए के एब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है? नहीं। लास्ट कौन बचा बच्चों? डीएनए। और जब डीएनए ने डीएनए को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया, मतलब डीएनए अभी नहीं है। अब ये केस में माइस विल रिमेन अलाइव एंड यू कुड नॉट आइसोलेट a strain or anything like that. आया ना? तो किसके एब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ? किसके एब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ? बोलो। डीएनए। मतलब डीएनए इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सो डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। Understood the point? Yes or no? So can I say over here transformation fails to what bachalo take place in the presence of in the absence of DNA. So DNA is the transforming principle. I hope you got it, everybody. Okay. So they basically continued with the experiment of Griffith. एक चीज क्या ऐड किया वो लोग ने? प्रोटीएजेस, आरएनएजेस और डीएनए। ये तीन ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए को उस सॉल्यूशन में रखेंगे कि हटा देंगे? हटा देंगे। बराबर है? तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो अगर हट जाता है, क्या होता है? वो हट जाता है, तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो किसके साथ हुआ वो चलोगे? थर्ड टेस्ट ट्यूब। वो कौन है? सो व्हेन यू ऐड टीएनएजेस, व्हाट इज रिमूव्ड फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब? सो विल ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस? सो विल द माइस रिमेन अलाइव और डेड? मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हैज
not taken place. So who is responsible for transformation? DNA. So can I say it's hence proved that DNA is the matlab DNA is the genetic material which is responsible for heredity and variation. But the problem with the scientific community at that time was they were heavily biased towards protein being the genetic material. So many of the scientists found out mistakes in the experiment conducted by Avery, McLeod and McCarthy with respect to the purity of the apparatus. मतलब काफी सारे उनके एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या निकाली गलतियां निकाली और उनके इस कंक्लूजन को ओवरराइड कर दिया और अभी भी काफी सालों तक यही बिलीफ चलती थी कि प्रोटीन्स इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर ऐसा बात समझ सबको कि नहीं समझा क्या समझा बताओ हाँ कि who is the transforming principle? DNA. Got it? And the third experiment was performed by Martha Chase. She knows the what? Okay, do one thing. Take all these two experiments and then we'll talk about the third and the final experiment to prove that DNA is the. So what are we in search of? The yes. What are we in search of? The chemical nature of the genetic material. So with Griffith's experiment, we proved that there is something called as the genetic material and it is the transforming principle. But with that experiment, were we able to prove that it is the DNA, RNA or proteins? No. Then the experiment was performed by Avery, McLeod and McCarthy. Look at the years 1933 to 1944. Okay, and look at the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase, 1952. So almost a decade हो चुका। एक 10 साल तक हम लोग इसी बहस में थे कि प्रोटीन्स है कि डीएनए, प्रोटीन्स है कि डीएनए। ओके, और ये वो टाइम है जब केमिस्ट्री में मैडम क्यूरी, द डबल नोबेल लॉरेट, she had discovered a radioactivity thing and already the technique had come into the scientific world where we could use radioactively labeled isotopes and trace the path of molecules like what you had been taught in photosynthesis. What Melvin Kelvin did, आप समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ आपको? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला मैंने? कि मैडम क्यूरी की वजह से बायो में बहुत हेल्प हुआ। उन्होंने जो रेडियो एक्टिविटी पे स्टडी किया है ना, वो हम लोग कैसे बायो में यूज करने लगे। क्या हम लोग क्या करते थे, हम लोग मॉलिक्यूल्स को रेडियो एक्टिवली लेबल करते थे और उनके पाथवे को ट्रेस करते थे कि कहाँ कहाँ ये मॉलिक्यूल जाएगा, किस किस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ये आराम से पता चल जाएगा कि रेडियो एक्टिविटी नेचुरली तो होगी नहीं किसी में। तो मेल्विन केल्विन ने भी क्या किया था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया कि नहीं किया बच्चों? C40 उसको किसके अंदर इंसर्ट किया, अलगा। फिर वो C कार्बन किस किस में गया, उससे उसको क्या किया, फाइंड आउट किया और फिर पता चला कि ये एस इसका फिक्सेशन होता है। बराबर है कि नहीं? वही सेम आइडिया हम यूज करने वाले ये वाला एक्सपेरिमेंट which was performed by Alfred Hershey and Martha Chase. Okay, where they gave, the NCERT says, they gave the unequivocal proof that DNA is a genetic material. मतलब एक ऐसा proof जिसको आप अभी deny नहीं कर सकते। Okay, for that they used, सबसे पहले बच्चों
ये वाला वर्ड आप सबको पता है, बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज, पता नहीं आप कैसे प्रोनाउंस करते हो, बैक्टीरियोफेज. ओके, who are these bacteriophage? They are viruses which can infect the bacteria. Right or no बच्चों? Like you have been told, they have this tadpole-like structure, है ना, बताया गया आप लोग को. These are those viruses which can infect the bacteria. How do they infect the bacteria? सबसे पहले they will attach to the surface of the bacteria. Okay, that is the first step of attachment. In the next step, what they'll do is they'll insert their genetic material into the bacteria. Okay, what they'll insert, bachlo? Genetic material into the bacteria. And what will be left out will be empty protein coats, because now the viral DNA has become a part of the bacteria. And what remains outside is, what does it remain outside, bachlo? Empty protein coats, which are also called as hosts. Alakshat kaise samjhoge थे? Are you following everybody? If you allow the infection to proceed further, in the next step what is going to happen is, you will see that ये जो रेड कलर का बैक्टीरियल डीएनए है, उसके अंदर वायरस अपने डीएनए को क्या कर देगा बच्चों? इंजेक्ट कर देगा. आया बात समझ में? अब वो ऐसे ही डॉर्मेंसी में जा सकता है, ये ब्लू वाला डीएनए, मतलब काफी टाइम तक बैक्टीरिया अपने बेबीज बनाते रहेगा और हर एक बेबी के अंदर क्या रहेगा? वायरस का डीएनए. आई बात समझ में? फिर कुछ टाइम के बाद दिस वायरल डीएनए will break down the bacterial DNA. It will take over the bacterial machinery और खुद के छोटे 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 बेबी क्या बनाएगा? वायरियॉन्स बनाएगा, जो इस वायरस बैक्टीरिया को मार के आएंगे बाहर. यू आर माय पॉइंट? इससे क्या होगा? वायरल मल्टीप्लिकेशन. वायरस के क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन. इसको लाइटिक साइकिल बोलते हैं. इस साइकिल को, जहाँ पे वो बैक्टीरिया को मार के वायरसेस बाहर आ जाते हैं, अपने वायरियॉन्स बाहर आ जाते हैं, इस साइकिल को क्या बोलते हैं? लाइटिक साइकिल. इट कैन ब्रिंग अबाउट लाइसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल. और जहाँ पे वो डॉर्मेंट रहता है, उस साइकिल को बोलते हैं लाइसोजेनी. क्या कहते हैं इसको? Lysogeny. Lysogen. So one cycle is lysogeny, other cycle is called as the lytic cycle. Okay, मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया. मैंने क्या बोला? The experiment was performed by Alfred Hershey and Martha Chase on viruses and E. coli, and on viruses called as what? Bacteriophages and E. coli. तो सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि how the bacteriophages is going to attack a bacteria like E. coli. पहले क्या करता है वो? अटैचमेंट, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल दिया, बाहर कौन बन जाता है बच्चों? एम्प्टी प्रोटीन कोट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? घोस्ट. अंदर क्या घुसा दिया बच्चों? वायरल डीएनए. वायरल डीएनए क्या करेगा? अटैच होगा किसके साथ? बैक्टीरियल डीएनए के साथ. हो सकता है उसके अंदर ऐसी डॉर्मेंसी में रहे. अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? अपने 1000 बच्चे बनाएगा, बैक्टीरिया के बच्चे. हर एक बैक्टीरिया के बच्चे के अंदर क्या होगा? वायरल का डीएनए. फिर कुछ टाइम के बाद वो क्या करेगा? शिफ्ट करेगा टू लाइटिक साइकिल. इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट्स बेबीज, किल द बैक्टीरिया एंड तबाह. तो उसका मल्टीप्लिकेशन देखो कितना हाई नंबर्स में होगी. उसने अटैच किया अपने आप को एक ही बैक्टीरिया के साथ. बैक्टीरिया अपने 1000 प्रोजेनीज बनाए, हर एक प्रोजेनी के अंदर उसका डीएनए है और उसके अंदर से उसने अपने मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाए.
Understood? That is how the bacteriophage works. That is how bacteriophage works. Clear? Background clear हो गया? Now see what they did. They divided their experiment into two phases. First is the preparation of the bacteriophage. कि सबसे पहले उनके एक्सपेरिमेंट को लगने वाले बैक्टीरियोफेज को उन्होंने प्रिपेयर किया. क्या प्रिपेयर किया? They took a bacteriophage, इधर भी बच्चे लोग, and they grew them in a medium containing radioactively labeled phosphorus, that is P32. समझा फर्स्ट स्टेप? क्या किया उन्होंने? बैक्टीरियोफेज को कल्चर किया, ग्रो किया. कौन से वाले मीडियम में? एक ऐसे मीडियम में जिसमें क्या था? रेडियोएक्टिवली लेबल्ड फॉस्फोरस, दैट इज P32. टेल मी, इन द डीएनए, आपने 11th में डीएनए तो पढ़ा है, प्रोटीन्स भी पढ़ा है. डीएनए और प्रोटीन में फॉस्फोरस किसके पास होता है? जो बोलो, बिंदास बोलो. डीएनए के पास. So can I say the radially active phosphorus will go into the DNA, as a result of which this bacteriophage का which part will become radioactively labeled and not the protein coat. So ये वाला जो bacteriophage है उसका कौन सा part radioactively labeled है? DNA. और the protein coat? No, not the protein coat. The protein coat is normal. Because what is the protein coat called? The protein coat is called as the capsid. And the capsid is made up of what? Proteins. And proteins contain sulfur. They don't contain phosphorus. Pakka? You got the first preparation? Pakka everybody? So now he has got thousands of what? Bacteriophages. Are they normal bacteriophage or radioactively labeled? Radioactively labeled. Which part is radioactive लेवल? उनका प्रोटीन का कोट और अंदर का डीएनए, क्योंकि उसने उसको किससे ग्रो किया? P32. और P32 प्रोटीन में जाएगा कि डीएनए में जाएगा? बस, मतलब पूरी एक बैक्टीरियल कॉलोनी ऐसी, सॉरी वायरल कॉलोनी ऐसी रेडी हो गई है जिसका डीएनए क्या है? रेडियोएक्टिवली लेबल्ड. सही है? सेकेंड, नाउ he took, or they took what? Bacteriophages, and they grew in a medium containing S35. Where who was radioactively labeled? Sulfur was radioactively labeled. Now what is your guess, guys? अब ये जो रेडियोएक्टिविटी होगी ये वायरस में कौन से पार्ट में पाई जाएगी? नंदनी, loudly. Protein coat. Got it? Because sulfur is a part of proteins, not a part of the DNA. अलग से सर वाटना आया ना? आता आपल्याकडे किती टाइपचे व्हायरसेस आहेत? दोन. एक ज्यांचं डॅश रेडिओएक्टिव्ह लेबल्ड आहे आणि दुसरं ज्यांचं कोट रेडिओएक्टिव्हली लेबल्ड आहे. अलग सर? पक्का everybody? Are you comfortable, all of you? Did you follow? Yes or no? Let's बड़े एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है? कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये देखो क्या लिया हम लोगों ने? बैक्टीरियोफेज. कौन सा वाला? P32 के S35 लिया मैंने. देख तो चोले, P35 लिया मैंने. हाँ, क्या वही बोली तू? तो सही गलत है? क्या 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 होना चाहिए? बोलना है. S35 होना चाहिए था ना वो, है ना? सो क्या लिया हम लोगों ने? S35 क्या लिया?
मतलब ये बैक्टीरियोफेज के कहाँ पे रेडियो एक्टिविटी है? डीएनए में। अब उसको इन्फेक्ट करा, किसको? ई कोलाई। ओके, एंड आफ्टर सम टाइम we separated the okay who is this? E. coli। उसके ऊपर कौन अटैच्ड है? बैक्टीरियो। और बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए किसके अंदर डाल दिया? ई कोलाई के। ये बैक्टीरियोफेज कौन सा? S35 कि B32? बराबर। अब उसको हम लोग ने ब्लेंडिंग किया। क्या? मिक्सर पे ब्लेंडिंग किया। मतलब बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई को सेपरेट कर दिया। बात समझ में? क्या कर दिया? सेपरेट किया। मिक्सर में उसको क्या किया? सेपरेट कर दिया। किसको किसको? ई कोलाई और बैक्टीरिया। कर दिया इतना। थर्ड स्टेप में we did centrifugation in a centrifuge tube। पता है ना centrifugation? And we allowed the we allowed the content to settle। We allowed the content to settle। Now you have two things. One will be the sediment and the other will be the supernatant। आदित्य, सेडिमेंट में बैक्टीरिया होगा कि सुपरनेटेंट में बैक्टीरिया होगा? और वायरस किस में होगा? सुपरनेटेंट में होगा कि सेडिमेंट में होगा? सेडिमेंट में बैक्टीरिया। और सुपरनेटेंट में वायरस होगा। क्यों ऐसा बोला आपने? बैक्टीरिया का ज्यादा होता है। मतलब बैक्टीरिया कासिब है और तू वायरस है, ऐसा? तो नीचे कौन सेटल होगा? नीचे कौन सेटल होगा? तो क्या क्या उसको बोलते हैं? बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग नया आ गया है, बॉडी शेमिंग मार्केट में। ओके, इसका भी ध्यान देना पड़ता है। आजकल तो बच्चे बहुत सेंसिटिव है। हम लोग को तो सर लोग ही बुलाता है, ये जाड़े इकडे उभी निकले जाड्या। हाँ कालिया। अब उसको हम लोग मेरे को बुलाते सर, मैडम ये काले इकडे तो जाना का बोलते सर। हाँ बोलता हमारे टाइम पे कालिया जाड्या बटल्या। अभी बच्चों इतना सेंसिटिव हो गया है। मतलब घर पे भी बच्चों लोग को बोलो ना, मैंने मेरे डॉटर को बोला यू आर ग्रोन सो थिन, उसका आंसर है अब यू आर बॉडी शेमिंग मी। ठीक है, बॉडी शेमिंग ये नया आ गया मार्केट में। क्या? बॉडी शेमिंग। हमसे सब प्रकार बनते रहे बाबा। ओके, और अदिति ने बढ़िया सा आंसर दिया। क्या बढ़िया सा आंसर दिया? कि सर जो नीचे बैठेगा वो कौन है? बैक्टीरिया। सुपरनेटेड में क्या होगा? वायरस। और हुआ क्या मालूम है? Radioactivity was detected in the supernatant and not in the sediment when we used S35। What does this prove? कि protein is not the genetic material. It remained back with the virus. It did not get inserted into the bacteria। Did you get my point? टेस्ट ट्यूब में कितने पार्ट्स हैं? नीचे वाला पार्ट कौन है? ऊपर वाला पार्ट कौन है? सेडिमेंट में कौन है? सुपरनेटेड में कौन है? वो वायरस कौन सा लेबल्ड है? तो हम लोग को रेडियोएक्टिविटी कहाँ मिला? क्योंकि S35 किसका पार्ट है? प्रोटीन के कोड का पार्ट है। और वो किसका पार्ट है? वायरस का पार्ट है। वो प्रोटीन कभी बैक्टीरिया के अंदर गया ही नहीं क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं। सेकंड केस में क्या हुआ रहेगा? फिर से वही क्या सेम बैक्टीरियोफेज वही यूज किया कि P32 यूज किया होगा? बाकी फिर पहले क्या इन्फेक्शन, सेकंड स्टेप में क्या ब्लेंडिंग, तीन स्टेप में क्या ड्रिंकिंग नहीं। वही सर रेडी। हां सर, हां ब्लेंडिंग के बाद ब्लेंडिंग के बाद क्या किया? सेंट्रीफ्यूज यार। सेंट्रीफ्यूज इतना बताने के बाद भी क्या किया? कितने पार्ट्स मिले?
कौन से सुपरनेटेड पे कौन है, सेडिमेंट पे कौन है, और रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिला, इसका मतलब P32 किसका पार्ट था, तो डीएनए किसके अंदर चला गया, सो वायरस जब बैक्टीरिया को अटैक करता है, उसको चेंज करता है, उसको जब तो अपना क्या इंसर्ट करता है उसके अंदर, तो कौन हो गया जेनेटिक मटेरियल, दैट इज गेटिंग ट्रांस, so it was the I'll read the NCERT line. I like to read the NCERT line. Where is the NCERT line, boys? Let me read the line. Now I'm not getting it. From the foregoing discussions. पता what do you mean by foregoing? इसके पहले वाले जो discussions हुए, it is clear. अच्छा निकाह की सबक ले रहे हो कुछ लोग? It is clear that the debate between proteins versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from Hershey and Chase experiment. Do you agree with this? Yes. मतलब it was like final nail in the coffin type of proof. Got my point? Where the case was solved. So who gave the undebatable proof, final proof that DNA is a genetic material? Hershey and Martha Chase. Kasif like the name, huh? To teach you styling materials. Put something in dim bits is like really the toughest job. Harsh was actually, yeah. Forget again. That is deoxy ribose. What was it? Nucleic acid. Right? Now, did you understand all the three experiments which were related to the search of the DNA molecule as a genetic material? Right? Now let us first talk about the chemical nature or the different chemicals that are going to come together to form the DNA molecule. Okay. So I'll basically say that the DNA molecule is made up of three main components. It is made up of sugar, it is made up of phosphate group, and it is made up of nitrogenous bases. The sugar in this case is a pentose sugar. It is made up of how many carbon atoms? 5 carbon atoms. Okay? Where 4 carbon atoms are a part of the ring, and the 5th carbon atom is outside the ring. It is a modified type of a ribose sugar. So if I say that this is a ribose sugar, where the second carbon atom shows the presence of an OH group. In our deoxyribose nucleic acid, this one O is missing. So now it becomes a
deoxyribose. मतलब ribose with one oxygen atom less is called as deoxyribose. Did you get my point, everybody? And if this oxygen would be present, then that sugar will be called as a ribose. And because one oxygen atom is less, the DNA molecule is more stable, whereas RNA molecule is more reactive. So that is why the higher organisms or most of the organisms show the presence of DNA as the genetic material. Did my class get this point, everybody? So between DNA and RNA, between DNA and RNA, which is the more stable molecule? DNA. क्योंकि उसका रिएक्टिविटी RNA से कम होता है कि RNA के सेकेंड कार्बन एटम पे हाईली रिएक्टिव OH. Okay? Second is what, chalo? The phosphate group. So you got phosphoric acid. What do we have? Phosphoric acid. This phosphoric acid gets ionized. The phosphoric acid gets ionized. So can I say this ionized phosphoric acid is called as the phosphate group. So what's the phosphate group? The ionized phosphoric acid is called as the phosphate group. Because of the phosphate group, our DNA molecule will get two properties. One, it will get a net negative charge. So we've got another properties each other. Okay. So who gives a net negative charge to the DNA? Phosphate group. Also, it gives its acidic nature. So I told you that the DNA has got a net which charge? Negative charge. And it is written in deoxyribose nucleic acid. So what's a nitrogen base? I call them nitrogen containing ring molecules. एक simple way में उसको describe करता हूँ. These are nitrogen containing ring molecules. So they have a ring structure. They can be dicyclic with a larger structure, which will be called as purine. Okay? Or they could be monocyclic, which are called as pyrimidines. And they will show the presence of what, which you know? They show the presence of what? Nitrogen in their rings. So these are organic molecules which contain nitrogen in them, and they are called as nitrogenous bases in the DNA. चलो इसको nitrogenous bases in the DNA. I hope you got my point, everybody over here. So chemically, what is the DNA made up of? The DNA is made up of three things: a pentose sugar of the deoxyribose type, ionized phosphoric acid, which is called phosphate group, and nitrogen containing those ring molecules. Did you understand how I am going to do things? Okay, tuck. Okay, next. Now, in order to build up the DNA molecule, sir, let's build up the DNA molecule with the very basic thing. Okay. सबसे पहले, the DNA is a macromolecule which will be made up of monomers. किंवा दूसरा शब्द, it's a polymer made up of monomers. ये दीवार है, it's a polymer. Single brick is a monomer. अलग ही लक्षण.
protein is a polymer. Amino acid is its cellulose. Glucose is the monomer. Cellulose, starch is the polymer. Whatever I can. Okay. So rather than directly talking about the DNA, let us first talk about the monomeric units of the DNA. Let us talk about what was monomeric units of the DNA. Before that, in the DNA, as you already know from school, as well as 11th standard, that there are two types of purines, adenine and guanine, and two types of pyrimidines, cytosine and thymine. Yes or no? Okay. So let us start with this. There is a deoxyribose sugar. Agreed with me, bachalo? Give me a yes or no. There is a deoxyribose sugar. To the first carbon atom, is attached a nitrogenous base. Who is attached to nitrogenous base? So can I say it's a sugar forming a bond with a nitrogen containing compound? It is formed by the removal of water molecule. This bond is called glycosidic bond. What is the bond called? Glycosidic bond. So here what has happened? There is a DRS, deoxyribose sugar, plus a nitrogenous base. Did you agree with me? On which carbon atom? The first carbon atom. And that is called as a nucleoside. What do you call it? Nucleoside. अगर वो एडेनिन है तो एडेनिन न्यूक्लियोसाइड है, ग्वानिन है या तो साइटोसिन है या तो थाइमिन है. तो एमसीक्यू के ध्यान रखना कि कितने टाइप्स पॉसिबल है? 4 टाइप्स इन डीएनए. बराबर कि नहीं? समझ रहे हैं बराबर? ये मैंने कुछ लिखा नहीं. यहाँ पे क्या हो सकता है? ए हो सकता है. नेक्स्ट टाइम क्या होगा? जी. फिर क्या होगा? सी. फिर क्या होगा? डी. तो कितनी पॉसिबिलिटीज हुई बच्चा? 4. बराबर है? नाउ to the fifth carbon atom. Which carbon atom bachalo? Fifth carbon atom. I see the presence of what bachalo? I see the presence of a phosphate group. Got the point? And this is a which bond? Ester bond. So can I say phosphate is attached to the fifth carbon atom by which bond? Ester. So now I have a nucleoside plus a phosphate. So can I say I am talking about a nucleoside monophosphate? Did you agree with this statement? And that is called as a nucleotide. How many types are possible once again? 4 types. It can be a nucleotide with adenine, nucleotide with guanine, nucleotide with cytosine, or nucleotide with thymine. And that is a monomer. It is the building block of the DNA. So who is the building block of the DNA? Nucleotides are the building block of DNA. Is the class following up to here? Give me yes or no? Yes. Pakka? Deoxyribose sugar plus a nitrogenous base nucleoside plus a phosphate nucleotide. Which is that bond with the fifth carbon? Is a ester. Let's go आगे बच्चों लोग. Yes or no? Okay. So help me over here. What is this? A adenine containing nucleotide. Who is this? Guanine containing nucleotide. Who is this? Again I am going to draw. Who? Adenine containing nucleotide. Rough.
What is this बच्चों? Cytosine containing nucleotide. What is this बच्चों? Thymine containing nucleotide. Ayana. So can I say that it's a polynucleotide strand? Can I say that it's a polynucleotide strand? No, not yet, because they are not connected to each other. इसको स्ट्रैंड नहीं बोल सकते. अभी तक वो लोग एक दूसरे से जुड़े साखली चेन झाली इंडिविजुअल है ना अजून पण. Then how can I say it's a polynucleotide strand? I can't. Now I have to create a polynucleotide strand. Did you agree with me on this, Uchula? Now, look here. Can I say the phosphate is attached to the fifth carbon atom by a dash bond? अब ये phosphate बोलता है सर, I can form one more ester bond. मुझे सिर्फ हेल्प करो एक OH निकालने के लिए. तो ये थर्ड कार्बन एटम है, इसके पास OH है. तो ये this phosphate will form another ester bond with the third carbon atom of the another nucleotide. Did you agree with me? So there is a phosphate esterification with the fifth carbon atom and phosphate esterification with the third carbon atom. So this phosphate is involved in how many ester bonds? 2. So it says that call me a phosphodiester bond, and I'm going to link up all the nucleotides to form a polynucleotide strand. So can I say a phosphate present in the fifth carbon atom will form a bond with the another nucleotide, with another nucleotide, with another nucleotide. So now is this a polynucleotide strand? Yes. And who joins the polynucleotide strand? Phosphodiester bond. Can I say it's the backbone of the DNA? Yes. Yes or no? Yes. So who will be included in the backbone of the DNA if you remember from 11th standard? The phosphodiester linkages, which link up all the polynucleotide strands. Can I say all the oxygen atoms are looking upwards? See, all of them are looking upwards. Now my question is कि अगर मुझे एक और esterification करना है, तो which carbon atom is free? Third, ना? So this side will be called as the 3' end. What do you call it? 3'. और अगर वहां पे अगर मुझे किसी को ऐड करना है तो किसके साथ अटैच हो सकता है वो? Phosphate and the 5'. And can I say all the oxygen are oriented upwards? So this will be called 3', 5' ascending strand. क्या दोस्तों? 3', 5' ascending strand. आई बात समझ में? So 3' indicates the position in which esterification takes place. 5' also indicates the position in which the esterification will take place with the phosphate. The phosphate at the fifth is free. The carbon at the third is free to form or to increase the chain up and down. So this is 3' end and 5' end. DNA is always red in the 3' to 5' direction. Barabar hai? So have you prepared a DNA molecule? No, you have not prepared it yet. Okay, now look at this. Okay, let's make it rough. Now, look at the oxygen atoms. They are oriented downwards. So this is the first carbon atom. It will show the presence of a nitrogenous base. Yes or no, guys? Oh yeah, now. Now, do we have a polynucleotide strand? No. Same way, क्या होगा? Diester linkages बन गया. Now, A और T है. आया ना? कौन है? A और T. तो एक साइड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. एक साइड क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. दूसरी साइड क्या होगा? हाइड्रोजन होगा. तब वो शेयरिंग हो जाएगा और आपको केमिस्ट्री बताते हैं ये जो डॉटेड लाइंस के साथ कि हम उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स.
So जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए रेडी होंगे उतना तुम वो बॉन्ड्स दिखाओगे. तो A और T के बीच में कितने बॉन्ड्स बनाए मैंने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. G और C कितने अवेलेबल हैं? 3. आया बात समझ में? Yes or no? So can I say now this is another polynucleotide strand? The oxygen atoms are oriented downwards. This is the 5' end and this is the 3' end oriented downwards. Now I have got 2 polynucleotide strands. Are they connected to each other? Yes. By weak hydrogen bonds. But because of them they are lax. As a result of which the bonding becomes very tight. I have got my point. So what did I construct? I constructed a DNA molecule. So how I constructed it? Damn, I didn't get it. Yes. So very well. Now, in tomorrow's lecture, we'll talk about the physical properties of the DNA. इसके बाद बात करें मतलब Physical properties of DNA. बराबर डबल हेलिकल और वो सारे. Okay. So if a quick recap of the lecture, we started with something like this. Okay, when you studied the chapter Principles of Inheritance and Variation, never once you spoke about the DNA molecule. Because that chapter does not talk about the molecular basis of variations. Okay? But we knew कि कोई तो होगा ना जिसको मेंडल ने क्या कहा फैक्टर, तो उसका केमिकल नेचर क्या है भाई? क्या वो डीएनए है, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या बिलीव करता था? प्रोटीन. तो सबसे पहले ये प्रूव करना था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द जेनेटिक मटेरियल, और वो हमने प्रूव किया. किससे प्रूव किया? ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. याद है वाला पूरा एक्सपेरिमेंट? The second experiment was performed by Avery McLeod and McCarthy, but still we were not 100% sure that DNA is. The third and the unique equivalent proof was given by Hershey and Marshall. वो पढ़ते वक्त हमेशा ध्यान रखना, पहले ये रीड करो कि उन्होंने बैक्टीरियोफेज को रेडी किया, एक को P32 रेडी किया, एक S35 रेडी किया. क्यों वैसा किया वो पढ़ो. उसके बाद एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, 3 स्टेप्स पे: इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन. फिर देखा गया जहाँ पे P32 है यूज किया हुआ, वहां पे रेडियो एक्टिविटी किसके अंदर है? सेडिमेंट के अंदर. और उधर किधर था? सुपर. और फिर वो टूट गया. Got my point? Then today we started with the chemical nature of the DNA. I have also सबको copy it down. That will be it from. Tomorrow we'll continue.